1 घंटे का समय प्रपोज था इस मीटिंग के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच होनी थी, तो वो समय खत्म हो चुका है, लेकिन बैठक अभी भी जारी है। 60 मिनट से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच ये वार्ता जारी है, जिसमें जो मैप दिखाया गया है, जो कुछ वहाँ बातचीत हो रही है, उसका हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। जो मैप दिखाया गया था वो हमने अभी दिखाया अपने दर्शकों को। वार्ता के बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो यूरोपियन यूनियन के नेता हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसके दौरान ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ सकारात्मक हो सकता है। लेकिन देखिए, सकारात्मक हो उससे पहले ही ये भी कह दिया गया है, किस तरह से संदीप त्रिपाठी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि देखिए ट्राइलेटरल बातचीत होगी, उसके जरिए कोई रास्ता निकलेगा। ज़ेलेंस्की तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, यानी पुतिन को तैयार होना है इस बैठक के लिए। यानी इस बैठक के बाद जब वो फोन करेंगे तो कुछ ऐसा ट्रंप अगर बता पाए पुतिन को, जिसके बाद वो तैयार हो ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए, तो रास्ता निकल सकता है। देखिए, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि इसमें रास्ता मुझे कुछ दिख नहीं रहा निकलते हुए। एक्चुअली बात क्या है कि जिस ये देखिए सर, मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए, जिस बात का इंतजार था ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप सामने, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के वो 7 महत्वपूर्ण सदस्य जो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए फोटो ऑप होगा और उसके बाद आगे की तस्वीर सामने हो जाएगी। ये देखिए वो अपॉर्चुनिटी जिसका इंतजार किया जा रहा था, फोटो ऑप। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जब मीटिंग संपन्न हुई है उसके बाद सब बाहर आए हैं और उसके बाद ये फोटो ऑप लिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त अब आपको समझना होगा कि आखिर इन सभी लोगों के बीच में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि चूंकि तस्वीर खिंचवाने का मौका है तो अमूमन सबके चेहरों पर स्माइल होती है या फिर एक कूल दिखने की कोशिश होती है। मनीष, आपको क्या दिख रहा है इस वक्त इस तस्वीर में? बिल्कुल, देखिए मुझे तो इस वक्त ये ज़ेलेंस्की का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है। आज ज़ेलेंस्की अकेले नहीं है, ज़ेलेंस्की के आजू बाजू में इस वक्त 7 और नेता हैं और वो सब ज़ेलेंस्की के सपोर्ट के लिए आए हैं, और इसीलिए आज ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ बदले बदले अंदाज में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज वो ज़ेलेंस्की नहीं है जिसे उन्होंने बहुत छोटा सा किरदार समझ रखा था। आज ज़ेलेंस्की को आगे करके ट्रंप के आजू बाजू में वो लोग हैं जो अमेरिका के पार्टनर कंट्री हैं, जिनके बगैर अमेरिका दुनिया में कुछ भी आगे नहीं करता है। और इसीलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ये सभी लीडर आए थे तब तो सार्वजनिक तौर पर वो ट्रंप से नहीं मिले थे, लेकिन अभी सब मिले और उसको एक फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी दी गई। अब असली बातचीत कमरे के अंदर होगी, जहां पर ट्रंप रहेंगे, ज़ेलेंस्की रहेंगे और वो 7 लीडर रहेंगे, और ये सब मिलकर ये तय करेंगे कि यूरोप की सुरक्षा गारंटी कौन देगा। ट्रंप को कहा जाएगा कि आप जो बात करने जा रहे हो, अगर आप पुतिन की शर्त मान गए तो फिर हमारा क्या होगा, और आसान नहीं होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। देखिए, अक्सर सभी सुरक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यूरोप जो है रूस से नहीं लड़ सकता, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के अधिकांश प्लेयर यूरोप के ही देश थे। दूसरे विश्व युद्ध से उन्होंने सबक लिया और हथियारों की रेस खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक नए हथियार की रेस इस मीटिंग के बाद, इस विजुअल के बाद मुझे नए हथियारों की रेस दिखाई दे रही है, जो कल सुबह से शुरू हो जाएगी। और देखिए, हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि आपने देखा पहले ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है। अब ये हमने फोटो अपॉर्चुनिटी देखी जिसमें तमाम यूरोपियन यूनियन जो 7 नेता है जो पहुंचे हैं, उनके साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, और उसके बाद अब यूरोप के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात होगी। ट्रंप की भी, ज़ेलेंस्की मौजूद रहेंगे, ये बैठक होगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम कह सकते हैं ट्रंप, देखिए। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी, उसके बारे में भी अब चर्चा होगी, क्योंकि इस वक्त हमें बातचीत किस आधार पर और क्या कुछ होती है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन इस वक्त की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में क्या कहती है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। दीपक वोरा सर, क्या आप कहेंगे, बॉडी लैंग्वेज देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप इस वक्त? ट्रंप ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से हार मान जाएगा, वो सरेंडर नहीं करेगा। उसको पता है, ही डजंट केयर, वो उसको बस मांगा चाहिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसकी सॉलिड कंस्टिट्यूएंसी है उनके लिए, और ये भी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए प्ले कर रहा है। देखो इतने सारे यूरोपियन, ये सब मेरे पास आए हैं, ये सब मेरे पास आए हैं। लेकिन एक बात और है, एक बात और है, मुझसे भीख मांगने आए हैं। जब पुतिन से मुलाकात हो रही थी तब हम और मनीष भी बात कर रहे थे कि बहुत ही हार्ड फेशियल एक्सप्रेशंस थे डोनाल्ड ट्रंप के, और आज भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, वो उसका नॉर्मल रहता है। अब थोड़ा बुजुर्ग भी हो गए, उम्र भी बढ़ती जा रही है फ्रॉम ट्रंप 1, बट ये स्टोरी जो ये करेगा, ये जो प्रिडिक्ट करेगा कि मैं शहंशाह हूं, ये बच्चे मेरे पास आए हैं कि मदद कर दो, मैं थोड़ी सी मदद इनकी कर देता हूं। बट एज फार एज आई एम कंसर्न मैम,
इसका जो इंटरेस्ट है वो रूस के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो यूक्रेन का ऑक्यूपाइड एरियाज के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यूरोप थक चुका है, यूरोप के पास कुछ नहीं है अमेरिका को देने के लिए, अमेरिका कुछ नहीं लेता उनसे, बेचना चाहता है उनको। सो दैट गेम इज ओवर मैम। अभी आप जो देखेंगी इट विल बी प्योरली द ट्रंप पुतिन शो और जेलेंस्की विल बी अ साइड शो। और साथ ही आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में लंच शुरू हो गया है और लंच के बाद यूरोपीय यूनियन नेताओं से आपको बता दें कि इस वक्त मीटिंग शुरू होने की जो जानकारियां हैं वो भी सामने आने लगी हैं। तो देखिए अब वार्ता शुरू हो गई है जिसमें ये जो तमाम नेता हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के साथ ये बातचीत होगी। ये अहम बातचीत है, इसमें क्या निकल कर सामने आता है वो बहुत अहम होगा। Well, we're building a big ballroom. Beautiful. Right here. If you go, it would be right through that. Please, come on. I think we're going to have a successful talk today. Yeah, me too. Please, come on in. Do you guys want to take some questions or anything? You feel like it? It's got 10 minutes, but we have 2 minutes. See. They're too long. Hi, Mark. Take 2 words. See you. Yeah, good. Well, thank you very much. It's a great honor to have you here. Special place. White House is special no matter where you're from. Represents so much, and it really is beautiful. And thank you for all of the wonderful things that took place today. We've had a very successful day thus far, and important discussions as we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal. Very simple goal. We want to stop the killing, get this settled. I've just had the honor of being with President Zelensky and all of the discussions that we've had. We covered a lot of territory, and I spoke indirectly with President Putin today. We're going to call President Putin right after this meeting. I'm sure we're going to have a solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep, because this is not since the Second World War has there been anything like this. So I'm honored to welcome NATO Secretary General Mark Rutte, who's a great gentleman, great political leader in Europe generally, but now he's the NATO Secretary General, and you're doing a fantastic job. Thank you very much, Mark. Prime Minister Starmer of the United Kingdom, our friend and my friend, and doing really well. And people like him a lot. We all like him. Everyone knows President Macron of France, who's been with me from the beginning, one of the first people I met as a foreign dignitary, and I liked him from day one. And I like him even more now. That's pretty good. That's unusual. That's a pretty unusual thing. Prime Minister Meloni of Italy, who's a really a great leader and an inspiration over there. She's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time. Chancellor Merz of Germany, who is a very strong person and a very strong leader and very highly respected in Germany. And he's my friend, and it's an honor to have him as my friend. Thank you very much. Very good. You look great with your tan. Where did you get that tan? I want to get a tan like that. That's true. President Stubb of Finland, and he's somebody that, where are we here? Where? I'm right here. Oh, you look better than I've ever seen you look. But you've done a great job, and we wanted to have you here because you're somebody that we all respect. And you've had a lot to do with the success, I think, and the potential success. And thank you very much for being here. We appreciate it. And the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, who is somebody that we just made a big deal with.
with all of those countries, I don't know. I think you might be more powerful than all these guys at this table. I don't know. But we had a great negotiation, and you're respected all over the world. So I want to thank you very much for being here. It's a great honor to have you. The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think there won't be. I think that's even overrated, largely overrated, but we're going to find out. And I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. We also need to discuss the possible exchanges of territory, taking into consideration the current line of contact. That means the war zone, the war lines that are pretty obvious, very sad, actually, to look at them. And negotiating positions. President Putin, also, you have President of Ukraine, who is, you just met a little while ago, and we're going to try and get a three-party meeting, maybe as soon as we can. And I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine working also together in agreement with President Putin. And I just think that's very good things are going to come of it. So I hope we have a good meeting. And if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin. And if you'd like, I'll go to that meeting. And not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying, and we got to save them. We got to save it. 5,000, 6,000, 7,000 people sometimes a week. All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace, and maybe something like that could happen. As of this moment, it's not happening, but President Zelensky and President Putin can talk a little bit more about that. You know, in the 6 or so wars that we stopped, we haven't had a ceasefire. And so I don't know that it's necessary. You can do it through the war, but it would be, I like the ceasefire from another standpoint. You immediately stop the killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future. With all of the wars that I got involved in, we only have this one left. Of course, as I walk out the door, there'll probably be a new one starting, and I'll get that stopped too. But I thought this was going to be one of the easier ones. It's actually one of the most difficult. They're very complex. The next step would be for a trilateral meeting, and that will be worked out. And I just look forward to working and having a great result. We're going to spend a lot of time today talking about, and we're really honored you guys came over. I mean, these are the heads of major countries and respected all over Europe. And they